that day, what was the last question? Anarchy. We completed? Third question. So this question we have to do, how anarchic is the present world order? Critically examine the relevance of realist thought. We have not done this. Okay, so write this question. How anarchic is the present world order? Examine the relevance of realist school of thought. Thought in present context. Okay. So how to start this question? How anarchic is the present world order? How to start this question? Is the present world order anarchic? What all theories we can use here? We can use which all theories? We can use structural realism. Structural realism of, तो हमेशा वहाँ पे ध्यान पहले ही लिख लो किसको किसको यूज करना है. Kenneth Waltz, Mearsheimer. Next, English school, Hedley Bull. Which other thinker? Okay, social constructivists, Alexander Wendt. Which other thinker we can use? Huh? Richard Ashley. Postmodernists? And complex interdependence. Cahoon and Nye. Then any other? Can we use billiard ball model? What? Yes. We can use. क्यों billiard क्यों नहीं जब realist है ये? Cobweb model किसका है? Burton? John Burton. And billiard ball. मतलब ये हमारा main fodder है which we have to put into the answer and understand it in the context. वो कैमरा चलाना होगा क्या? तो हमें तो मूव करना है सर से को, एक जगह नहीं खड़े होगा. ठीक है. तो how anarchic is the present world order? What will be the introduction? Defining anarchy. Should we define anarchy first? World order. Okay, define world order. कैसे start करोगे? How anarchic is the present world order? Now here you think why this question is asked. Somewhere we will have to use the term globalization also. Okay? So here it is very important. After all, this particular question emerges from where? How anarchic is the present world order? From where should we start this question? Should we start describing what is world order? How you think? Present world order or what is world order?
without explaining word order. No, you should first explain what you understand by the word order. What is word order? Okay, so explain. First point क्या होना चाहिए? Explain word order. Okay, so how to explain word order? What does word order defines? Actors, who are different actors in international politics, distribution of power. Okay, so right, the word order implies the understanding of the key actors and the distribution of power. This is word order. Now next, what you should explain? Cold War word order. You should jump directly to the Cold War order. Treaty of Westphalia. But what will be the connecting statement? Word order is a evolving concept. Okay, so what you can say, right, if we look at the history of, don't write evolving because maybe the realist will have objection. Okay, so you can simply write, if we look at the history of the evolution of international politics, we can find following forms of word order. First is a Westphalian word order. Primarily till Second World War. What was the feature of a Westphalian word order? Regional and multipolar. ठीक है, right? A regional order defined by multipolarity, where balance of power was the natural law. Natural law. Now, right, the second word order, Cold War word order, determined by bipolarity, where balance of power was replaced by what? Balance of terror. Next, the post-Cold War world order. Right, though the beginning of the post-Cold War world order continues to be debatable, yet with the disintegration of USSR, we can see the beginning of new world order determined by what?
जॉर्ज बुश नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चल रहा है? अभी तक हमने मल्टीपोलैरिटी, बाईपोलैरिटी, अब डिटरमाइंड बाई यूनिपोलैरिटी, comma, a situation explained by Francis Fukuyama as the end of history. Now, balance of power or balance of threat given way to what? Stability is through what? Huh? What was the system? Balance of power was for the stability of Westphalian. Then came deterrence. Now in the third phase, through what system the stability was maintained? Hegemonic stability theory. Okay, so write the balance of terror has given way to you can write bandwagoning, write inverted commas, bandwagoning, right, since USA emerged as a single superpower, we do not see the emergence of a counter coalition or hard balancing against USA, against single superpower. Is this clear? So next, right, the post-Cold War situation. Was also defined by scholars as the global world order. Right? It has been said that the forces of globalization has converted right inverted commas state-centric geopolitics to geocentric global politics. Right? Scholars like John Burton, Rosenau, R-O-S-E-N-A-U, Rosenau have proposed, Rosenau, R-O-S-E-N-A-U, Rosenau have proposed the model of transnational world order or the cobweb model. Full stop, right? Neoliberals like Joseph Nye and Robert Cahoon described the situation as right inverted commas complex interdependence. Right, next, there has been debate
among the scholars whether there is a structural transformation in the nature of word order. ठीक है, तो there is a structural here, right? Realists continue to believe that there is no structural change comma word order remains state centric, anarchical, where nations will continue the policies of defense and offense. ठीक है, तो राइट, thus for realists there is nothing new in the so-called new world order. Right, for realists, the transnational actors are the proxies of the states, are the proxies of the states. ठीक है, right? Geopolitics will continue to shape international politics. ठीक है, तो राइट नेक्स्ट, राइट, अगेंस्ट द रियलिस्ट क्लेम्स comma English school scholars suggest the need to take evolutionary perspective right. There is a tremendous growth in international law, regimes and conventions. As a result, anarchy is giving rise to anarchical society. Full stop, right? Right, from the perspective of postmodernists, anarchy is the construction of the realists. Right, Richard Ashley, through his concept of anarchy problematic, highlight how anarchy
expressed by realists suffer from questionable assumptions. इसकी ज़रूरत नहीं है. सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट तो बिलीव करते हैं एनार्की, बट एनार्की लीड्स टू पावर पॉलिटिक्स इज़ अ कंस्ट्रक्शन. इट नीड नॉट लीड टू पावर पॉलिटिक्स. तो इसकी ज़रूरत नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ रियलिस्ट स्कूल in present context. What is the relevance of realist school in present context? It is relevant. Okay, so you can say that, right? It is true that realism has been the hegemonic discourse comma hegemonic discourse comma came under eclipse in the initial years after the Cold War. Yeah, it was in retreat कह सकते हो. Realism was in retreat in immediately after the end of Cold War. Okay, right. However, since right inverted commas power transition taking place and the global balance of power is shifting towards Asia, comma there is a revival of realist school, full stop, right? The global financial crisis comma the rise of protectionism in the core regions of the liberal world point towards the retreat of liberalism. ठीक है, right? Hence, realism once again has come to acquire the position of hegemonic discourse, especially in context of US-China relations. And the resultant efforts by the two countries to go for the hard and soft balancing. ठीक है, क्या सिर्फ वर्ड्स जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ये आंसर समझ में आ गया? तो फिर से काउंटर कोएलिशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड, USA going for his nuclear posture review. So again re-established as a hegemonic discourse. Fine? Now the second part of the question, do we have to mention mission? कर सकते हो, मतलब मुझे लगा बहुत लंबा हो गया कहीं भी, मतलब I am just giving you the idea. What is the question? Okay.
So now write the next question. Write to what extent globalization is transforming the idea of sovereignty, comma, right, explain the concept of disaggregated state. Disaggregated state. Disaggregated state. एक और क्वेश्चन लिखो. Distinguish globalization from internationalization and regionalization. Right? Do you think that regionalization and globalization are the contradictory phenomena or they are complementary phenomena? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू वॉट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन इज चेंजिंग द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी. इसमें कैसे लिखेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सॉवरेनिटी से कि ग्लोबलाइजेशन से? क्वेश्चन सुनो. टू वॉट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन इज चेंजिंग द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी. तो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट रिफ्लेक्स क्या हो रहा है, व्हाट इज सॉवरेनिटी. तो पहले डिफाइन करो व्हाट इज सॉवरेनिटी. व्हाट इज सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी डिफाइन कर लोगे. व्हाट इज सॉवरेनिटी. सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट. तो राइट, उसमें क्या डिफाइन करोगे, राइट. सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट इज अ फीचर ऑफ द वेस्टफेलियन world order, comma, right. It denotes the supreme power, supreme power of the state in both external and internal spheres. Right, the first exposition of the concept emerged in the works of whom? In the works of Thomas Hobbes. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो. अब इसको लिंक करो, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज इम्पैक्टिंग द सॉवरेनिटी. ठीक है. तो व्हाट यू कैन से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज बीन द सिस्टम ऑफ sovereign states. That is why its structure is anarchical. ठीक है. Right, the Westphalian world order and the notion of sovereignty
continued till Second World War. Right. After Second World War, we see the rise of two superpowers, comma, reducing the status of other states as satellites. ठीक है. Right, next, the biggest change happened after the end of Cold War. Giving rise to the global interdependence. Giving rise to the global interdependence. Right, next paragraph. Right, the global world order has necessitated what? Global world order has necessitated. Complete this. क्वेश्चन किस पे? नहीं, सॉवरेनिटी पे. नेसेसिएटेड. क्वेश्चन क्या है? हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इम्पैक्टेड. ठीक है, तो ओके, नेसेसिएटेड, बस खत्म. नेसेसिएटेड द reformulation of the concept of sovereignty. अब कौन से न्यू आइडियाज आ गए? पूल्ड सॉवरेनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट. ओके, फाइन. राइट, द न्यू आइडियाज like first लिखो, sovereignty as a responsibility rather than power had emerged in the form of responsibility to protect. इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दो. राइट, इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट sovereignty should not be seen as supreme power of a state to act in a unilateral manner in violations of the norms of the emerging global civil society. Now write second concept, pooled sovereignty. The norms of the emerging global civil society. Now write pooled sovereignty. Right, the rise of international organizations, regimes, global threats like climate change, transnational terrorism, have gone beyond the capacity of a single state, comma,
including the single superpower, requiring states to act in what? Concert with each other. To act in concert with each other. Right. Right. It implies the more responsible use of sovereignty by the states. Now, third concept is disaggregated sovereignty or state. ठीक है. Disaggregated मतलब division. जैसे rise of international organization, regional organizations. So the sovereignty is transferred to various organizations. So it is not concentrated. It is disaggregated. Have you understood the idea of disaggregation? Right? The disaggregated sovereignty represent the distribution of the sovereignty among multiple organizations, regional, international, supranational, right? One of the best examples of the disaggregated sovereignty is European Union. राइट अब इसको कॉन्क्लूड कैसे करेंगे ये आंसर राइट हाँ अब नेक्स्ट लिखो राइट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट्स सॉवरेनिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन remains debatable. Among the three schools of thought. First है globalists. ग्लोबलिस्ट में किसका नाम आएगा केनिची ओहेम जो भी बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात करते हैं और सुजैन स्ट्रेंज globalists, Kenichi Oheim, and Suzanne Strange. Anti-globalists, Stephen Krasner और रॉबर्ट गिल्पिन ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट्स लाइक डेविड हेल्ड और भी है कोई हाँ बॉब जेसप तो पूरा थ्योरी के थिंकर थ्योरी के कॉन्सेप्ट थ्योरी की लैंग्वेज डाल दिए थ्योरी के पेपर में ठीक है सोरेनसन ने तो चेंज बताया है ना हाँ यस और यू कैन राइट दैट Sorensen has analyzed George George Sorensen has analyzed
that globalization has not impacted all states equally. All states equally. So now what was the next question? You can understand the difference between globalization and internationalization. तो इसको पूरा नहीं लिखते हैं. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? Deterritorialization, borderless world, where लिखो ऐसे global difference in globalization and internationalization. तो इसमें what you can say that in globalization territories lose the relevance and international politics becomes pluralistic. Right? Besides states, comma, transnational actors come to occupy the core या come to occupy important role in the politics. Right, can be expressed through cobweb model. Can be expressed through cobweb model. So, right, globalization denotes weakening of a state. Now next is internationalization. Right, internationalization does not represent either deterritorialization or weakening of states. Right, represented by international organizations like League of Nations, United Nations, right? These international organizations continue to act according to the choices of the states. ठीक है, और उसके बाद क्या था? रीजनलाइजेशन. What is regionalization? Right, regionalization shows regional integration, primarily regional integration, comma, it is primarily an economic concept but it can also have political and socio-cultural dimensions. Political and socio-cultural dimensions. अब इसका और ग्लोबलाइजेशन का रिलेशन क्या है? रीजनलाइजेशन
is a weakening of globalization or building block? Both way. ठीक है, right? Regionalization and globalization has complex relation. Right? In one way, regional organizations act as a trade blocks, weakening the multilateral negotiations, comma, on the other hand, regional trading agreements can be seen as a building blocks for the final emergence of universal global multilateral ट्रेड रेजीम. ठीक है, अब इस साल के लिए फेमिनिस्ट थियोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि 2018 ईयर ऑफ, पता नहीं, फेमिनिज्म इज़ अ वर्ड ऑफ द ईयर 2018 कुछ ऐसे CNN पे था. तो फेमिनिज्म, यू कैन राइट फेमिनिस्ट थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ऐसे लिखो, जस्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन द फेमिनिस्ट थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अब रियलिज्म की कोई थियोरी आएगी, किसके कोट से स्टार्ट कर सकते हो? थ्यूसाइडाइडिस. और फेमिनिज्म की कोई थियोरी है? हाँ, देयर इज नो थियोरी ऑफ स्टेट. नो, सिमोन डी ब्यूवो से स्टार्ट करो. पिछली बार तो सबने ऐसे में भी लिखा था, और सबने ही लिखा था, वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमेन, वन बिकम्स वुमेन. ठीक है, लेकिन अब वो सबको पता है, एक नया स्टेटमेंट लिख लो उनका. ठीक है, नहीं याद आए तो इसी से काम चलाना. ठीक है, लिखो स्टेटमेंट, लिखो राइट, आई डू नॉट वॉन्ट वुमेन to have power over men, but power over themselves. Okay. सिमोन डी ब्यूवो. कुछ नहीं याद आए तो फिर वही लिख देना, वन इज़ नॉट बॉर्न वुमेन, वन बिकम्स वुमेन. और सबने ऐसे में यहीं से, इसी से स्टार्ट किया और अच्छे अच्छे मार्क्स ले आए. वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमेन. ठीक है, वुमेन पे तो आना ही है, तो थोड़ा सा न्यू कोट हो जाएगा. तो सिंपल क्वेश्चन की जगह आई थिंक देयर वाज वंस अ क्वेश्चन ऑन फेमिनिज्म एंड रियलिज्म, कुछ ऐसा था ना. या एक तो क्वेश्चन ही लिखो, राइट, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द रियलिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अब एक और क्वेश्चन लिखो, राइट, अकॉर्डिंग टू द फेमिनिस्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस इज द लास्ट bastion, BASTION, of social sciences.
last bastion of social sciences. Full stop, right? Explain the feminist perspective. With respect to the above point of view. एक और देखो शॉर्ट नोट, द फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज बायस्ड. एक और अच्छा स्टेटमेंट है, थिंकर तो नहीं याद रहेगा बट फेमिनिज्म के स्टार्टिंग के लिए अच्छा है. एक और कोट लिख लो, ठीक है, कोट को बॉक्स में कर देना, ठीक है, कोट को लिख दो. फेमिनिज्म इज अ रेडिकल नोशन दैट वुमेन आर ह्यूमन बीइंग. ये लिया गया है फ्रॉम फेमिनिस्ट डिक्शनरी. क्रिस क्रैमरे इनकी बुक है, अ फेमिनिस्ट डिक्शनरी इन्होंने लिखी है. आई एम राइटिंग फॉर यू, बाकी देख लेना, याद नहीं रहेगा. KRAMARAE क्रैमरे, क्रिस क्रैमरे, और बुक का नाम है अ फेमिनिस्ट डिक्शनरी. तो ये वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, फेमिनिज्म इज अ बायस्ड. लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था, बताओ. गिव एन असेसमेंट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ कंटेम्पररी ग्लोबल इश्यूज. फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज, वो जब अभी वो कराएंगे जेंडर जस्टिस, उसमें करेंगे, तो उसमें क्लाइमेट चेंज, WTO, ट्रेड, उसके ऊपर वो क्वेश्चन आएगा. डेवलपमेंट, पावर्टी, वो वाला क्वेश्चन है, थियरी वाला नहीं है, ठीक है. तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन करते हैं. फेमिनिज्म क्या है? बायस्ड. Feminist approach to international politics is biased. Comment. It is biased. How will you write? Feminist, shorty note में लिख के देखते हैं. Feminist approach to international politics is biased. क्या क्या लिखना चाहिए? पहले तो स्ट्रक्चर लिखो, क्या क्या पॉइंट्स गैदर करो. Feminist approach to international politics is biased. तो सबसे पहले तो फेमिनिज्म, व्हाट इज फेमिनिज्म होना चाहिए फर्स्ट लाइन में. तो व्हाट इज फेमिनिज्म, दैट तो यू नो, ठीक है. या तो राइट फेमिनिज्म इज एन आइडियोलॉजी as well as a school of thought which tries to understand how patriarchy has impacted the status of women and how to liberate women from the situation of patriarchy. अब एक नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द, ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिखो, व्हाट इज द एम ऑफ फेमिनिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स.
2 एम्स हैं. फर्स्ट लिखो, टू रिवील द जेंडर्ड नेचर ऑफ द डिसिप्लिन. Second, to bring gender concerns at the center of debate. A prominent feminist scholars, तो prominent feminist scholars का नाम रख लिखो, एन जे टिकनर. इनकी बुक तो याद ही करके जाओ, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस. जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस कॉलन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव in achieving global security. Feminist perspective in achieving global security. तो इनके की आइडियाज क्या क्या हैं? मेन तो वही है, क्रिटिसिज्म ऑफ रियलिस्ट्स. जस्ट पहले रिकैप करो फिर लिखते आंसर. क्रिटिसिज्म ऑफ रियलिज्म. सेकेंड, या क्रिटिसिज्म ऑफ रियलिज्म. सेकेंड है इम्पोर्टेंस ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी. थर्ड है हाईलाइट द मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन. एक बार बुक का टाइटल फिर भी चेक कर लेना, आई थिंक ये होना चाहिए. अब नेक्स्ट है सिंथिया एनलो. सिंथिया, CYNTHIA, सिंथिया एनलो, ENLOE, सिंथिया एनलो. और इनकी बुक है बनाना बीचेस एंड बेसिस. And basis. So what does she tells? हाँ लिखो, right. According to her, women are not excluded, but are on the periphery and their contribution is not acknowledged. Right. In her book, she has shown how international politics enters the life of women by pointing different roles women play. Like sex workers, plantation workers, and wives of ambassadors. एक और लिखो, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म. पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में नाम लिखो जूडिथ बटलर, JUDITH, जूडिथ बटलर. Write the title of her book, Gender Trouble.
gender trouble. So postmodern feminists, what they say that feminism is not, problems of all women is not same. So feminism is a fluid concern, the problem of black women, white women. So they are against essential feminists. Essential feminists try to homogenize the woman and they try to segregate it. Okay, right? Right. Butler has rejected essentialism and suggested that feminism is a fluid category. Can we call it intersectionality? Is it intersectionality? Okay, write in bracket, right, they emphasize on intersectionality. Intersectionality, comma, right, women should not, intersectionality, women should not be treated as a single homogeneous group. मतलब फेमिनिज्म, मेन फेमिनिज्म फिर मैटर नैरेटिव है. एवरी वुमेन मे बी हैविंग हिज ओन, हर ओन स्टोरीज, वो वाला कंसेप्ट. अब एक और लिखो, जस्ट डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म में यू कैन राइट ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स defines feminism as praxis, Praxis, praxis oriented normative theory comma inspired by the ethical concern of inclusivity. मतलब women are excluded, ethical concern of inclusivity. And sometimes not feminists, just women, they all include other LGBT and all. So inclusivity का concept है. और एक और फैक्ट लिखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 रिकॉग्नाइज द right of women to participate in international negotiations and international negotiations or peace processes. ये सब कुछ फैक्ट्स. एक और थिंकर हैं, उनका नाम थोड़ा गड़बड़ है, दो से ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे. हाँ ठीक है, दो ही रहने दो. अब बताओ आंसर, ये सारा कंटेंट यूज करो आंसर में. प्रैक्सिस ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड. तो फेमिनिज्म एज अ थियरी का पर्पस है एनालाइज द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड चेंज इट. ठीक है. अब क्या हो, साउंड नहीं आ रही? वहाँ नहीं आ रही है? माइक इज नॉट वर्किंग. हेलो हेलो, सेल बदलो. अच्छा ओके.
एसी ऑन है, स्विंग भी हो रहा है. Okay. So now let us see this particular question. क्या था? Realist theory of international politics is biased. Excuse me, ma'am. Feminist theory In is which biased. category new feminism would fall into? Like I'm talking about whether it would fall into essentialism or postmodernism. New feminism. Yes, ma'am. New feminism will be post-feminism only. Post-feminism. It will not be essentialism. Actually, new feminism you should compare with radical. Radical feminism से compare करना है. So is it the revival of like? Postmodern feminism means it comes from postmodernist theory. So what they say, it is not just go by single story. There can be multiple stories. Context is different. Postmodernism is just a analytical और theory है, वो तो school of thought है. और post feminism या new feminism और new woman मतलब confident woman, not that old woman suppressed and all. तो वो movement से और different, that is related to the movement. और post feminism is analyze how we should analyzing the things. ठीक है? Ma'am, Yeah. question was that feminist approach is biased. We have to like explain it. But in the whole theory, which statement explain this? Like we have though given all the scholars, but still ये it's not. तो एक मटेरियल है, मतलब इसको यूज करो. ठीक है? These are like basic things you can use. So अब लिखो ये क्वेश्चन. Feminism is a biased. भूल जाता है. हाँ, the feminist approach to international politics is biased. Comment. तो इसमें क्या क्या लिखोगे? पहले तो feminist approach लिख सकते हैं. And which type of theory? Reflectivist. ओके तो ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड डाल दो, राइट. सो फेमिनिज्म इज अ रिफ्लेक्टिविस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. राइट. फेमिनिज्म is a umbrella ideology today with different schools of feminism. However, their basic concern is marginalization of women because of patriarchy and to improve the status of women. या ये कट करके सीधे वो भी लिख सकते थे. According to Oxford Encyclopedia of International Politics, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे. फेमिनिज्म इज अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड नॉर्मेटिव थियरी. प्रैक्टिस ओरिएंटेड नॉर्मेटिव थियरी distinguished by ethical concerns of inclusivity. फिर आ जाओ फेमिनिस्ट थियरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ऊपर वाले से अच्छा यहीं से स्टार्ट कर सकते थे. तो राइट, द फेमिनिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स attempts the critique of, write inverted commas, male stream theories. Don't write mainstream. Okay?
male stream theories. Like realism, liberalism, Marxism, and social constructivism. Right? Scholars like Anne J. Tickner, in her book Gender in International Relations, Cynthia Enlow, in her book Bananas, Beaches and Bases. एक और इनका लिख ही लो, याद रहेगा तो ठीक है. जॉन एल्स्टिन, ELSHTEIN, JEAN, a French word is Elstin, ELSHTEIN, Elstin. इनकी बुक का नाम है पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन. पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन. हाईलाइट पॉइंट्स में लिख देते हैं. द मैस्कुलिनिस्ट नेचर ऑफ द डिसिप्लिन, lack of woman perspective, lack of acknowledgement of women's contribution, right? Next paragraph. According to feminists, write in inverted commas, male stream theories not only contribute towards the perpetuation of patriarchy, but also distort the understanding of international politics, and its purpose. Right? They are specifically critical to the realist view of security, war, realist view of security, war, national interest, and neglect of ethics. अब इसके बाद ये क्वेश्चन एड्रेस करो. Is it biased? You will call feminist theory biased? Normative? Every theory is biased. No. जहाँ भी दुखी गरीब लोगों की बातें हों, उसमें इंटेलिजेंट नहीं दिखना है कि हम समझ गए. थोड़ा सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक रहना है. ठीक है? तो लिखो राइट. It will not be appropriate to call feminist theory biased. Rather,
it should be called as a normative theory, trying to bring ethical concerns and inclusivity right in comparison to feminist theory. We can say realism is biased, comma, a state-centric view guided by power monism. Power monism, right? Feminist theory, in fact, highlights the limitations of the traditional mode of analysis and try to force policy makers towards the concerns of half of the human race. Is this clear? तो जहाँ पे कोई इस टाइप का दुखी वाला ग्रुप है और थियरी बायस्ड बोली जा रही है, तो उसके लिए बेटर वर्ड कौन सा है? नॉर्मेटिव रादर देन बायस्ड. ठीक है. But ma'am, we have to point the realist, criticize and call feminist theory को आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा. Realists call feminist theory biased. Realist क्या कहेंगे? Feminists are utopian, impractical, irrelevant. Who will prefer feminist theory? और ये भी लिख सकते हो कि feminist theory is getting increasing attention या recognition. ठीक है. Feminist theories are getting increasing recognition as United Nations Security Council Resolution 1325 recognize the necessity of women's participation in international negotiations, comma, certain countries like Sweden adopting feminist foreign policy, comma, increased awareness about gender justice in international organizations, comma, right, necessity of development of women recognized in Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals. तो इनका प्रैक्टिकल अचीवमेंट भी है. ठीक है. सेंट्रलिटी, ये UN Security Council resolution itself is a big achievement.
plus feminist foreign policy, so they are able to change the existing situation. ठीक है, तो उनका अचीवमेंट भी है फेमिनिज्म का. नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. अब पोस्ट मॉडर्निज्म पे करो. कौन सा था? लास्ट बेस्टियन ऑफ सोशल साइंसेस. इसका मतलब है according to the feminist international politics is most reluctant in changing or bringing the feminist perspective. Other disciplines like sociology, economics, का तो पता नहीं शायद, sociology, political theory, etc. have acknowledged, but out of all discipline, realism remains the most, not realism, international politics remains most masculinist. मतलब maximum resistance to change. ठीक है, तो बाकी की तो हमें नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन. मतलब इसी कंटेंट को इधर उधर, फेमिनिज्म तो आए, कंटेंट इतना तो लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन सोचना है. इतना तो मतलब 1/3 टाइम में लिख दो थियरी, एक स्टेटमेंट लिख दो, 3 थिंकर, उनकी किताब, उनका की, फिर सोचना है कि क्वेश्चन क्या था, या पहले सोच के, बट ये तो लिखना ही है चाहे कुछ भी आए. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. डिस्कस द पोस्ट मॉडर्निस्ट critique of realism. अब पोस्ट मॉडर्निज्म पे कुछ की पॉइंट्स लिख लो. पोस्ट मॉडर्निज्म अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ, एक तो लिखो पहला कोट, हाउ कैन history has a truth. How can history has a truth, comma, when truth has a history. इसका मतलब नहीं समझे? मतलब ट्रुथ की एक हिस्ट्री है, ट्रुथ किसी ने बनाया है, तो हाउ कम हिस्ट्री इज अ ट्रुथ. कहने का मतलब है नॉलेज पावर कनेक्शन. ठीक है, ये स्टेटमेंट है स्मिथ, SMITH, स्मिथ. स्मिथ का नाम ना भी रहे तो भी तुम ऊपर लिख सकते हो, हाउ कैन हिस्ट्री एज अ ट्रुथ व्हेन ट्रुथ हैज अ हिस्ट्री. ठीक है, एक और स्टेटमेंट लिख लो फूको का. मिशन कौन? स्मिथ का नाम कोई प्रीलिम्स का एग्जाम थोड़ी. ठीक है, इतना ही था. ठीक है, 4 ऑप्शन, एडम स्मिथ, दिस स्मिथ, दैट स्मिथ, ऐसा कुछ नहीं. तुम नाम ही नहीं लिखो, बट ये अपनी तरफ से ही लिख दो ना, नॉलेज पावर कनेक्शन का एप्लीकेशन के फॉर्म में. ठीक है, दूसरा फूको, मिशेल फूको, FOCAULT, नहीं FOCAULT, मिशेल फूको. और राइट द कोट, देयर इज नो पावर विदाउट correlative constitution of field of knowledge. Comma, there is no knowledge which has not presupposed power relation at some time. या इतना लंबा नहीं भी आए तो नॉलेज इज पावर लिख देना. ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है
This is from his book Discipline and Punish, 1979. Discipline and Punish. So first of all, introduction of postmodernism. So point number 1 you can write. It has become a dominant way of analysis in social sciences since 80s. Since 80s. Full stop, right? The term entered into the philosophical lexicon in 1979 with the publication of Lyotard's postmodern condition. Where he explained postmodernism as what? Incredulity towards meta narratives. ठीक है, अब लिखो the other, right? The other postmodernist scholars include Foucault, who gave the concept of discourses and Derrida, D-E-R-R-I-D, who gave the method of deconstruction and double reading. लिखो राइट according to Stanford Encyclopedia of Philosophy. According to Stanford Encyclopedia of Philosophy, right, comma, it is indefinable set of rhetorical perspectives challenging the so-called, right inverted commas, dogma, D-O-G-M-A, dogma or truth. Dogma or truth. अब इनका थीम क्या है? थीम एक्सप्लेन कर दो, राइट? या सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस कौन कौन है? नीत्से, मार्क्स भी कर सकते हो, मार्क्स, नीत्से, ये मतलब फिलॉसफी में हाइडेगर, H-E-I-D-E-G-G-E-R, Heidegger, H-E-I-D-E-G-G-E-R, Heidegger. Or what is their main theme? Right, they challenge meta narratives and acknowledge multiple narratives.
अब इसकी जरा मेथडोलॉजी यू जस्ट राइट मेथड्स, इनके लिखो राइट मेथड्स. राइट जीनियोलॉजी, GENEALOGY, जीनियोलॉजी. तो जीनियोलॉजी में फूको हैज़ done the history of the evolution of a truth, मतलब how a particular truth has emerged and how it has replaced the other truth. तो एक तरीके की genealogy is a type of the study of history where he is trying to understand the emergence of discourses. ठीक है, तो you can write genealogy proposed by Foucault, where he traced the history of how discourses emerge, get established and replace the other discourses. Next write deconstruction, एक methodology लिखो deconstruction. Right, it is a special method of interpretation of text. A special method of interpretation of text. Right, according to Derrida, there can be multiple interpretations. Right, even the true meaning of the text may differ from what author understands. Author को भी नहीं पता क्या लिख ठीक है, ठीक है. अब इसमें लिखो राइट scholars like Richard Ashley have applied the methodology of deconstruction and double reading ठीक है. तो राइट according to them international politics is also a text. Is also a text, comma, should be understood from multiple perspectives. अब लिखो डबल रीडिंग. डबल रीडिंग right comprise of multiple readings, actually multiple readings. इसमें होता है राइट द फर्स्ट रीडिंग अकॉर्डिंग टू द dominant interpretation, comma, second reading is alternative interpretation.
right? It is based on the idea of any understanding can be a misunderstanding. Right? Richard Ashley has done the double reading of anarchy. Right? The first established reading and the second alternative reading. ठीक है, और इसका जो समरी है, राइट, पोस्ट मॉडर्निज्म मीन्स देर इज नो बेस्ट एक्सप्लेनेशन, देर आर मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस. इसको विद एग्जाम्पल यू कैन एक्सप्लेन. फॉर एग्जाम्पल, US war on Iraq in कब हुई थी, हम तो भूल भी गए. 3 in 2003. फर्स्ट लिखो, द डोमिनेंट रीडिंग इज for the promotion of democracy and human rights. Now write, second reading may suggest the expansion of USA's geopolitical interests. ठीक है, याद आ गया पोस्ट मॉडर्निज्म. तो ये वर्ड्स डाल देने पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे है. अब कौन सा, आई थिंक यही क्वेश्चन आया था ना, रियलिस्ट, सॉरी, पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ, अब लिखो इसको, पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक ऑफ रियलिज्म. तो रियलिज्म से स्टार्ट करोगे या पोस्ट मॉडर्निज्म से? दोनों से ही कर सकते हैं, लेकिन रियलिज्म से ही ठीक रहेगा. पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक ऑफ रियलिज्म. तो फर्स्ट राइट अबाउट रियलिज्म. रियलिज्म में क्या लिखोगे? हेजेमोनिक, लिखो जल्दी. हेजेमोनिक डिस्कोर्स considered as timeless wisdom. और क्या लिखोगे जिससे हम वी कैन कनेक्ट विथ पोस्ट मॉडर्निस्ट? व्हाट? पोस्ट मॉडर्निस्ट से कनेक्ट कर पाए. मेटा नैरेटिव. तो एक्चुअली पोस्ट मॉडर्निस्ट challenge science, claims of truth, consider it as dogma, or all realist scholars, whether it was Morgenthau or Kenneth Walls, they have explained realism as a scientific view of international politics. Is this clear? तो इससे लिंक कर दो, right? Right, the systematic study of realism starts with Morgenthau, who claimed
his 6 principles as the scientific analysis of international politics. Right, next, Kenneth Waltz, right, on the basis of structural analysis, has tried to strengthen the claims of realists as a scientific theory of international politics. A postmodernist critique, लिखो, right, postmodernism as defined by Lyotard is incredulity towards meta narratives, right, according to them theories are stories and no theory can claim to tell the absolute truth. Right. Instead of a meta narrative, postmodernists believe in multiple narratives. Right. For postmodernists, realism is a discourse, comma, postmodernist scholar like Richard Ashley applied Derrida's deconstruction and double reading while giving his concept of right inverted commas anarchy problematic. Right. Thus, for postmodernists, there cannot be a single explanation comma, there has to be the pluralistic understanding of international politics. मतलब they don't accept the claim of truth. ठीक है? Yeah. In such questions, should we define realism? What is realism in 1, 2 or 3 lines? हाँ कर सकते हो ना थोड़ा सा. Realism is a hegemonic discourse which says that which has a state-centric view and believe that वो तो कर सकते हो. अब next लिखो post-colonialism. Post-colonialism या post-colonial approach.
अगर कोई क्वेश्चन पोस्ट कोलोनियलिज्म पे आएगा तो ये वाला कोट लिख देना, लिखो कोट, लिखो colonialism is not satisfied. Colonialism is not satisfied merely by holding people in grip, comma, emptying their brain of all form and content, comma, it promote a perverted logic comma, distort, disfigure and destroy the past of the people. Distort, disfigure and destroy the part of the people. This is a state past. लोगों की हिस्ट्री बदल देते हैं, मतलब ठीक है. This is a statement of very important thinker Franz Fanon, F-A-N-N-O-N. So basically they just don't control the body, wealth, mind, but also distort, destroy and disfigure the past. Okay, so colonialism as a project. Franz Fanon, very important post-colonial scholar, and his famous book, The Wretched of the Earth. I don't know this statement is from there, but वैसे लिख लो The Wretched of the Earth. ऐसे लिख सकते हो The Author of the Wretched of the Earth. और एक और इनकी बुक है Black Skin, White Masks. White Mask. White Mask. ठीक है, बाकी तो पोस्ट कोलोनलिज्म वी हैव ऑलरेडी डन. ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है. पोस्ट कोलोनलिज्म, व्हाट इज द पर्पस? इसका पर्पस लिखो. व्हाट इज द पर्पस? पर्पस ऑफ पोस्ट कोलोनलिज्म. फर्स्ट, they highlight that colonialism has ended only formally. Next, the exploitation of the people in colonies is still continuing. Right? The field of academics continue to be dominated by Eurocentric theories. And there is a need to decolonize it. बाकी जो भी था वो लिख सकते हैं आप. पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स लिखो जल्दी. पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स. Edward Said gave the concept of Orientalism.
Edward Said gave the concept of Orientalism. SAID, side. Next, Gayatri Spivak. Can subaltern speak? Homi Bhabha. Book क्या है? The Location of Culture. The Location of Culture. तो अब ये तो जनरल पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स हैं, प्राइमरीली लिटरेचर के लोग हैं, ठीक है। तो आईआर में लिखो, आईआर स्कॉलर्स, स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हाँ हाँ, देखो मोहम्मद अयूब, इन्होंने दिया है सिक्योरिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थर्ड वर्ल्ड। नेक्स्ट, अमिताभ आचार्य। एक और लिख सकते हो, आनिया लुम्बा, ANIA, आनिया लुम्बा। और एक लिखो भूपिंदर बरार। बरार, BRAR, ठीक है। बाकी कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। आप पोस्ट मॉडर्निज्म पे पोस्ट कॉलोनिज्म पे क्वेश्चन लिखो। पहला लिखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन post colonialism and post modernism. You know the difference? हाँ, but inspiration तो post modernism से ही है, but post modernism is saying that reality can have different perspective, and post colonial they talk about the existing domination of the western theories in the discipline. Is this clear? अब ऐसे एक क्वेश्चन लिखो जिससे ये क्लियर हो जाएगा, और कमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। राइट दिस क्वेश्चन, while post modernism seeks to look at international politics afresh, a fresh perspective, comma, a fresh, comma, rejecting positivist approach, comma, post-colonialism explores the neglected field of international relations. कमेंट बंद करके लिखो, क्रिटिकली एग्जामिन। इसको कैसे लिखेंगे? लिख लोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है क्वेश्चन। आई टोल्ड यू द डिफरेंस। कैसे लिखेंगे? While postmodernism seeks to look at international politics afresh, rejecting positivist approaches, post-colonialism explores neglected field of international relations. Starting line क्या होगी? हाँ? Rejecting positivist, पहले तो सारे कीवर्ड्स ऐसे गोल गोल कर लिया करो, क्या क्या लेके आना है। तो पॉजिटिविस्ट को कहीं डालना पड़ेगा। पोस्ट मॉडर्निज्म में फ्रेशनेस क्या है?
और पोस्ट कॉलोनलिज्म में नेग्लेक्ट क्या है? तो क्या लिखोगे? पहले तो पॉजिटिविस्ट थोड़ा लिखना पड़ेगा, बोथ आर, बट स्टार्ट जैसे पॉजिटिविस्ट है तो यू कैन से दैट द ट्रेडिशनल international politics has been dominated by the positivistic schools like realism, neo-realism, and since 1980s there has been the growth of reflective and critical theories. They can be categorized as one. Is this clear? So point number 1 क्या है? Right, the traditional international politics theory has been the domain of positivists. For example, realism and neo-realism. Full stop, right. However, since 70s there is an academic movement challenging the positivist theories giving rise to reflectivist theories like postmodernism and postcolonialism. फिर एक पैराग्राफ postmodernism पे, right? Postmodernism challenge meta narratives or the claim of any theory telling the absolute truth. Right. They suggest that so-called theories are discourses comma, there is a need to deconstruct and go for double reading of the text. Right, the prominent post-modern scholars include Foucault, Derrida, Lyotard. And in international politics, Richard Ashley, Rob Walker, Derian. Next paragraph, Derian, Derian. इनका नाम भी पोस्ट मॉडर्निस्ट लगता है. पता नहीं कौन से देश के हैं. Derian. अब नेक्स्ट लिखो, राइट, पोस्ट कॉलोनियलिज्म is an attempt by the scholars of post-colonial societies challenging, right inverted commas, Eurocentrism
of the mainstream theories ठीक है तो राइट post colonialism has its epistemological origin. Epistemological origin in postmodernism. Right, Edward Said's Orientalism. Edward Said, S-A-I-D, Said's Orientalism is based on Foucault's theory of knowledge-power connection. Right. The other post-colonial scholars include Gayatri Spivak, Homi Bhabha, in the field of international politics, Muhammad Ayub, Ania Lumba, Bhupinder Barar, Amitav Acharya, ठीक है right thus if postmodernism has given a new way of understanding the truth, post-colonialism tries to bring the voice of the people living in inverted commas peripheries. Right, at times the application of mainstream concepts like security dilemma may not be adequate to understand the security issues in these societies, and at times the prescriptions of dominant theory may prove problematic. May prove problematic. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखते रहो. Right, to what extent it is appropriate to accept the post-colonial argument that Marxism is
Eurocentric. मतलब Marxist theory of international politics is Eurocentric. Is Marxist theory of international politics Eurocentric? Which theory? Dependency theory? Dependency theory not given by the scholars of third world? Which theory? The main theory. ठीक है, तो सबसे पहले तो मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. Right, right. There are three major theories of international politics. Within Marxism, first, world system theory, based on orthodox Marxism. Yeah, is orthodox Marx based on orthodox Marxism. Given by Emanuel Wallerstein. Second, Gramscian perspective. Given by Robert Cox. And the critical school, also known as emancipatory school, given by Andrew Linklater. तो अभी तो हमने ऐसे लिखा दिया, लेकिन वहाँ पे अगर लिखना तो साथ ही में उसका थीम एक्सप्लेन कर देना, ऐसे नोट कर लो, क्योंकि अलग अलग फिर एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा, लेकिन केवल लिखने से काम नहीं चलेगा. तो वर्ल्ड सिस्टम थियरी इज बेस्ड ऑन materialistic interpretation of history. Gramscian theory focus on the importance of superstructure, hegemony, and the third theory is transformationalist. तो थोड़ा सा दो लाइन में explain करना है. Now Marxist theory is Eurocentric, right? Right? Marxist theory of international politics is Eurocentric, remains a debatable issue. Right, right. According to the post-colonial scholars, Marx himself was Orientalist. मतलब वो खुद ही वेस्ट को प्रेस करता था. Himself was Orientalist. लिखो राइट. Edward Said, S-A-I-D, Edward Said has highlighted the Orientalist ethnocentric approach of Karl Marx with respect to his views on British colonialism in India.
right? He considered British colonialism as a modernizing force. For Indian society. Right, he even believed that through colonialism, the people living in Asiatic societies will be able to achieve the socialistic mode of production. मतलब colonialism आएगा, फिर exploitation, फिर revolution, इनका अपना तो कुछ आना नहीं, तो इनके लिए colonialism is a blessing in disguise. ठीक है, तो right, however, here in recent time, John Hobson calls Karl Marx as Eurocentric and Marxist theory of international politics as consciously ethnocentric. ठीक है, तो right, however, scholars like Aizaz Ahmad, A-I-Z-A-Z, Aizaz Ahmad and Kevin Anderson challenge the view that Marxism is Eurocentric they have established that Marx was an internationalist, a revolutionary, and the liberator of humanity. ठीक है, तो एजाज अहमद तो काफ़ी फेमस नाम है. केविन एंडरसन की ऐसे थीसिस से पता नहीं उन्होंने ऐसे क्यों पूछा है इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट ऐसे लिखना पड़ेगा डिबेट. और मार्क्स हिमसेल्फ हैज़ प्रेज्ड ब्रिटिश रूल बिकॉज ही थॉट दैट दिस इज़ द वे द ब्रिटिश इंडियंस कैन अचीव. लेकिन दे से वी शुड नॉट इंटरप्रेट बिकॉज you can interpret Marx from different point of view and Marx should not be considered as Orientalist. ठीक है, या ओरिएंटलिस्ट का मतलब है जो ओरिएंट को एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट के रूप में देख रहा है. ओरिएंटलिज्म ही एक आइडियोलॉजी है ना. Orientalism as an ideology means they are projecting Orient as backward. हाँ? एडवर्ड साइड कह रहा है कि
नॉलेज पावर कनेक्शन. तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स स्टडीड ओरिएंट, उन्हीं को ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं. दे हैव ट्रीटेड द स्टडी ऑफ ओरिएंट एज अ प्रोजेक्ट and projected that Orient was inferior, barbaric. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन लिखो. Right, in what way world system theory is a alternative to the modernization theory? ठीक है, तो अब इसमें लिखो मॉडर्नाइजेशन थियरी, या लिख सकते हो मॉडर्नाइजेशन थियरी एज वेल एज वर्ल्ड सिस्टम थियरी डील्स विथ पोस्ट colonial societies or developing areas. अब लिखो मॉडर्नाइजेशन थियरिस्ट्स. Right, modernization theorists like Samuel P. Huntington, Riggs, और कौन है? रोस्टोव ने थर्ड वर्ड. सैमुअल पी हंटिंगटन लिखो. राइट, वो डेवलपमेंट है. केनेथ ऑर्गेंस्की, ORGANSKI, Kenneth Organsky believed that the only way the countries in the South can address poverty and underdevelopment is through modernization, westernization, industrialization. Right, hence they suggest the integration of these economies with international economy. वही एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है. अब नेक्स्ट लिखो. राइट, वर्ल्ड सिस्टम थियरी is a critique of modernization theory. Right, it was developed by the scholars of Africa, Latin America, for example, A.G. Frank, Emanuel Wallerstein, Samir Amin, right. According to them, these countries should pursue
the path of autonomous national development right, the integration with international economy will result into right inverted commas development of underdevelopment comma unequal exchange and uneven development unequal exchange. So write the dependency or the theory of dependency or the theory of development of underdevelopment right, were quite prominent till the beginning of the globalization, yeah, beginning of the, you can say, end of Cold War. Right, since the end of Cold War, there has been greater dominance of the perspective or Western discourse that integration with international economy is the only way for development. Right, globalization has resulted into the creation of semi-peripheries, yeah, emergence of semi-peripheries which are very few in number. Right, in most of the situations, Marxist analysis appears relevant. Yeah, underdevelopment theory appears more relevant. एक लास्ट क्वेश्चन करूँ from theory. In what way Marxist theory of hegemony help in what way Marxist theory of hegemony help in understanding the contemporary dynamics of international politics. अब ये बताओ, Marxist theory of hegemony given by Gramsci, international politics में Robert Cox. What he suggests? How superpowers have maintained the hegemony, or how they have maintained the world order which has perpetuated their hegemony, not simply by the military or economic means, but also by
आइडियोलॉजिकल मीन्स। ठीक है, तो लिखना है कि नहीं? लिखो, स्ट्रक्चर बस लिख देते हैं, मेन पॉइंट्स क्या है। इन व्हाट वे मार्क्सिस्ट थ्योरी, तो पहला मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हेजेमनी comes from Gramsci. फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज हेजेमनी। हेजेमनी मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, कंट्रोलिंग माइंड, right? It is a situation where exploited finds happiness in his own exploitation. फिर रॉबर्ट कॉक्स applied in context of international politics. With what he has applied, right? He has tried to show how the two hegemons first Britain till Second World War, USA after Second World War, right, has been able to establish its hegemony and gain the benefits right. The ideas promoted by USA to maintain its hegemony are democracy, human rights, right? These ideological forces helped in maintaining the hegemony of USA. Right, right. It has created a condition where other states feel that US leadership is a public good. ठीक है, ठीक है, तो right, however at present US hegemony is in crisis. And we see the greater reliance on hard power. So USA is itself destroying its hegemony. और होगा तुम लोगों से कुछ? अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, आंसर मत लिखो वरना भूल जाएंगे। क्वेश्चन लिखो, हाउ कैप्लान्स सिस्टम्स थ्योरी
is contrary to the fundamental precepts of systems approach. तो अब ये सारे क्वेश्चंस सुनो. इज रियलिस्ट अप्रोच द बेस्ट मेथड? ये कर लोगे ना. वर्ड सिस्टम डेवलप्ड बाय इमैनुअल वॉलरस्टीन. critically examine the functional and system approaches to the study of international relations. functional कौन सी है? हाँ, piece by pieces. differences between Morgenthau and Kenneth Walt's realism हो गया. feminist approach biased. Kaplan वाला चलो कल कर देंगे. factors that led to the transformation of word from billiard ball to cobweb model हो जाएगा. हाँ, वही है. rise of the forces of globalization. does Marxist approach explain contemporary relations, international relations? partially. intellectual precursors of realism. building piece by pieces. अच्छा, ये नहीं हो पाएगा तुम लोगों से. लिबरल इंटरनेशनल थियरीज आर एसेंशियली यूरोसेंट्रिक एंड नॉट नेसेसरली इंपीरियलिस्ट. ये करा देंगे. और वो व्हाट आर द ग्रेट डिबेट्स हो गया. सिस्टम्स अप्रोच एंड रेलेवेंस. डॉयश मॉडल. डॉयश मॉडल किसका है? मतलब कौन सी थ्योरी है? कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म. ठीक है, तो कल वो पढ़ के आना है. पावर, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, डेटरेंस. और अगर वो ख़त्म हो गया देन वी विल डिस्कस द पेपर. तुम लोगों ने दे दिया टेस्ट? अभी नहीं दिया है? हाँ, तो टेस्ट डिस्कस करें अभी कि नहीं करें? पढ़ रहे हो? नेक्स्ट वीक टेस्ट. ठीक है, तो कल आई विल डू डिटर्मिनेंट्स अगर टाइम बचा. आई विल मार्क just Yes, two books. yeah, You will revise it or revise. Means relatively It will take 7-8 days. 7 I mean this question. पेपर 2 पार्ट हुआ था जो डिटरमिनेंट्स का हाँ, पेपर 2 सेक्शन बी. मॉर्गेंथ्यू का एक स्टेटमेंट निकाले हैं. क्या मॉर्गेंथ्यू का स्टेटमेंट तुम्हें आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? पढ़ के आए तो लॉ से बेटर लग रहा है. मैम लॉ का सिलेबस ही नहीं होता तो क्या क्या पढ़ लेंगे उसमें. यहाँ कम से कम सिलेबस हो जा रहा है. ये पढ़ लिया है एक बार बट चेंज हो गया है नोट्स 5-6 साल में. बहुत डिटेल्ड हो गया है. हाँ, तो वो भी क्वेश्चन उस तरह से आने लगे ना. मैम जो कंटेंट चाहिए ये स्टेटमेंट हैं? उस पर कोई दे दो. हैंड आउट होगा क्या कंटेंट? इन्हें करा देंगे. मैम इस क्वेश्चन में मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हेजेमनी हैज बीन अंडरस्टूड. मैम शुड वी फर्स्ट स्टार्ट विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट. लेकिन अगर लंबा नहीं है तो शॉर्ट है, तो ज़्यादा कंटेंट है तो डायरेक्ट है. कंटेंट कम हो तो घुमा के. मैम मुझे मार्क्स और पोस्ट कॉलोनिस्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें हम लोग इमेंसिपेशन थियोरी को भी यूज़ कर सकते हैं कि वो हम लोग को बोलती है कि बाउंड्रीज हटा दें एंड पोस्ट कॉलोनिस्ट भी बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड उस पर फोकस करें. बिकॉज मतलब लाइक वो उतना ज़्यादा नहीं है यूरो. मतलब क्वेश्चन के टाइम मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है तो हम लोग को ये डिबेट नहीं पता होती. हाँ, तो उस केसेस में उस तरह का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अभी फिलहाल इतना ही रहना हाँ, है. नहीं, अभी हाँ, तो- तो तब तो कुछ भी करोगे. दे दो. वो तो इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पर नहीं कैसे